क्योंकि हमें तो पता है काफ़ी अरसे से जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है और प्रोडक्शन बहुत कम है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स से हॉर्स मीट जो है वो वहाँ से उनको मिला है और जो बीफ होना चाहिए था, ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर भी जिस तरह सूर का गोश्त और हराम गोश्त मुसलमानों के कुछ प्रोडक्ट्स में भी मिला है। ये इसलिए हमने फैसिलिटेट की है ये मीटिंग, ताकि लोगों को पता चले कि हलाल और हराम में क्या डिफरेंसेस हैं और जो अथॉरिटीज़ हमारी यानी ऑर्गेनाइजेशंस जो ओवरसी करती हैं, क्या वो हलाल और हराम की डिस्टिंग्विश सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। We are thankful for the horse meat saga and the accidental testing of the Irish Food Standard agencies, as a result of which pork has come to the forefront, which we wouldn't have known about otherwise. The current oversupply of halal meat is not a covert ploy by Muslims to convert the rest of the British population into Islam, but rather reflects the unfortunate fact that over 90% of the meat in the British beef, lamb and poultry meat supply chain is not deemed as halal by Muslims. This meat comes from slaughterhouses with halal claims that their meat is halal. It isn't. It's covert halal. If they're not prepared to tell their own communities that they're producing halal, what guarantee can they give us that what they're giving us is true halal? Although in the UK the current law protects the religious slaughter of animals under the statutory law, it is paramount that the people of good faith in the UK and other European countries need to get themselves involved in the political system to protect the religious freedom and to create a just society for all. We have a mutual understanding with Shikita UK that we will work together in defending the common issues such as the circumcision and the religious method of slaughter. Muslims must ask themselves, why do we need to settle for something that is surrounded by doubt when we are allowed under the law to produce and consume the true halal as prescribed by the divine power? We've been advised that the horse meat and pork adulteration in food forms no health risk, therefore is not a high priority. We all know that the modern gadgets you can test and detect horse meat and pork. However, you cannot test what is halal or what is haram. The fact that these products are adulterated are in violation of circular law, and the authorities have an obligation to investigate and remove these products regardless of whether it is a halal issue or not. This is a major failure to maintain product integrity. What we're asking is, why are the local authorities not adapting the Food Standard Agency's own guidance note on halal? This forms the lowest common denominator. The guidelines took over 5 to 6 years in consultation with various Muslim organizations and stakeholders, completed and issued in 2003 at the cost of over £5 million of British taxpayers' money. It was reissued in 2010 and still is blatantly being ignored for the benefit of the non-Muslim companies, such as fast food fried chicken outlets. We need to do our part, and we need to do it correctly. We need to lobby the government, like the gentleman said. We need to ask some burning questions of the government, of the FDA. We need to get people like Lord Nazir over here, other senior politicians, our MPs who are Muslims, to put it down, to ask these questions of the government, of the FDA, people who are in authority. These things will happen, they will come up, they will surface, they will resurface unless some really rigid laws are laid down. These people need to be penalized, they need to be punished, they need to be fined. And they need to have their licenses revoked. They must not trade again in that industry. They have hurt our feelings, they have defrauded us of our belief. For now, we need our concerns to show correctly in the correct way. We are debating it here. We don't need to debate this. We know exactly what has happened. We need to get out there. We need to get the message to the government. We need to lobby our case to the government. That is what I'm here to say. Thank you very much. Really, what you really need to do is to lobby your members of parliament and also your local authority. There are literally hundreds of councillors, and the trading standards comes under local authorities. So you need to go back to your councillors and you need to contact your members of parliament. Don't expect anything from Lord Nazir Ahmed, because he's not going to be able to deliver it. So, you know, it might sound good if I said to you, don't worry, I'll sort it out. I can't. You really need to go and see your councillors, and you need to
see your members of parliament, you need to write, you need to run a campaign. था आज से 10 साल पहले तो हमें हलाल फूड मिलता ही नहीं था, आज मिलता है। तो हमारी परेशानी ये है कि वो अडल्ट होकर मिल रहा है, मिक्स होकर मिल रहा है, नॉन हलाल मिल रहा है, हमें बताए बगैर उसके अंदर पोर्क के जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें शामिल कर दिए गए हैं। चिकन की जो ब्रेस्ट है उसके अंदर पानी भरने के लिए जो प्रोटीन इस्तेमाल होती है वो पोर्क की बनी हुई है, ताकि पानी वहाँ ठहरा रहे। उसके लिए जो प्रोटीन इस्तेमाल हुई है उसको तहकीक करके साबित कर दिया गया है कि वो प्रोटीन बनी हुई है पोर्क मीट की। इसी तरीके से हमारी WTO के अंदर पोर्क के जो बाल हैं, जो एनिमल हॉर्स से जो हेयर है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी वजूहत थी बेचैनी की, लेकिन हमारी बात को उस हद तक नहीं सुना जा रहा था जिस हद तक हम सुनाना चाहते थे। अब हमारा कंसर्न भी सेम वही है कि अगर हमें हलाल फूड भी नहीं मिलती, अगर हमारे बच्चों को हॉट फूड खाना पड़ता है, पैक फूड जो है वो उसके अंदर अडल्ट्रेशन हो चुकी है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? तो इस जिम्मेदारी की निशानदेही करने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए आज हाउस ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड नज़ीर साहब की सरपरस्ती में, जो कि कारवान फिक्र के पैटर्न भी हैं, हमने ये इनेकाद किया। आपने देखा मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग यहाँ आए, जिसमें ब्रिटिश भी थे, जिसमें कीनिया के लोग भी थे, अरब कम्युनिटी के लोग भी आए, सोमालिया के लोग भी आए, इंडिया से भी आए और पाकिस्तानी बेशुमार लोगों ने साथ दिया। तो आज ये हमारा मैसेज है कि हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कवानीन के मुताबिक हम इस मसले का हल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और ये बरतानिया एक बहुत ऐसा कंट्री है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को अवॉइड बाय करके कम्युनिटी के हर फर्द को मौका देता है, उसकी बात सुनता है और उसकी परेशानी का हल निकालता है। तो कारवान फिक्र का भी यही मसला है। हम अगले स्टेप पे इंशाल्लाह पिटीशन लेके आने वाले हैं, हम अगले स्टेप में इंशाल्लाह MPs के साथ रब्ता करने वाले हैं। हमारी इंशाल्लाह इसकी मौजूद कॉन्फ्रेंस भी आएगी जिसमें इस्लामिक स्कॉलर्स भी आएंगे।